Hello students, today we will be covering topic spherical capacitor of the chapter electrical potential and capacitance, that is chapter number 2. So firstly we'll just check the construction of a spherical capacitor. It mainly consists of the two spherical conductor named sphere A and sphere B. The outer surface of the sphere B is grounded. The radius of the inner sphere is represented here by RA and the radius of outer sphere is represented by RB. We have given the positive Q charge on the inner sphere. Due to the induction process, the negative charge will get induced on the inner surface of the sphere B and there will be a positive charge on the outer surface of the sphere B. Because of this grounding effect, the positive charge will get neutralized. So now we will come to the derivation of the capacitance of this spherical capacitor. So from the very basic knowledge of the capacitance, it is very clear that capacitance is defined as the Q by V. So here the charge is represented by a smaller q, so I am representing it as small q. Here C is the capacitance of the capacitor, Q is the charge on either of the sphere. We just have to consider the magnitude only. And what is V here? V is the potential difference. So in order to find out the potential difference between two spheres, we just need to find out the potential on the surface of sphere A as well as on the surface of sphere B. If we just got the potential at the surface of sphere A as well as on the surface of sphere B, so we can simply get the potential difference. So in order to find out the V, we will find out VA as well as VB. So firstly we will just find out the value of the potential at surface A. Now see how many number of potentials are there on the surface of sphere A. The figure clearly shows there are two number of potentials. एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एंड अनदर इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज. एक पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव की वजह से होगा, दूसरा पोटेंशियल हमारा नेगेटिव की वजह से होगा here at the surface of the sphere A. And as the potential is a scalar quantity, so net potential on the surface of sphere A will be simply the algebraic sum of both the potential. Now, what will be the potential on the sphere, surface of the sphere because of this positive charge? This positive charge is lying on the surface, right? So the formula of the potential is K Q upon R A as the charge is positive. So considering this potential as positive. अब बेटा B की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस ए स्फीयर के सरफेस के ऊपर वो कितना होगा? अब देखो जो बी चार्ज है, बी स्फीयर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दिस सरफेस ऑफ द स्फीयर ए इज लाइंग इनसाइड ऑफ द स्फीयर बी. तो स्फीयर के इंटीरियर में जो पोटेंशियल होता है बिल्कुल कांस्टेंट होता है और उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जो सरफेस के ऊपर होती है, राइट? तो जो ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से ए स्फीयर के सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? दैट इज के नेगेटिव क्यू अपॉन में आर बी. एज द स्फीयर ए इज लाइंग इन द इंटीरियर जोन, इंटीरियर रीजन ऑफ द स्फीयर बी, सो इन द इनसाइड द पोटेंशियल इज कांस्टेंट. स्फीयर के इंटीरियर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू क्या होती है? जो स्फीयर के आउटर के ऊपर होती है. तो अगर मैं बी स्फीयर को देखूं, बी स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो बी स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा इंटीरियर में. तो वही पोटेंशियल जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से ए स्फीयर के सरफेस पे भी होगा. सो द पोटेंशियल बिकम नेगेटिव के क्यू अपॉन आर बी. नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल, राइट? सो सिमिलरली वी विल जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल एट बी. So B के बेटा सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे. अगेन देयर आर टू नंबर ऑफ पोटेंशियल, वन इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, another is because of the positive charge. Now the surface B is lying in the exterior zone of the
स्फीयर ए, तो स्फीयर ए से कितने स्फीयर ए के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्फीयर ए के सेंटर से तो आर भी डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज पॉजिटिव के क्यू एज द डिस्टेंस इज आर बी, सेंटर ऑफ स्फीयर ए से आर बी डिस्टेंस के ऊपर यहां पर मुझे निकालना है। एंड फॉर द नेगेटिव, एज नेगेटिव चार्ज इज लाइंग ऑन द सरफेस, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर बी, राइट, नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो बेटा वीबी के तो दोनों पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट है, तो वीबी कितना हो गया, वीबी इज 0। सो इफ वीबी इज 0 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ द वीए, देन वी नो दैट वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वीए माइनस में वीबी। We'll just simply put the value of VA and VB. So what will be our expression become? So VA is KQ upon RA minus में KQ upon RB. This is VA and minus में 0. Right? So we will just take the KQ common. So we have taken the KQ common. Here it become 1 upon RA minus में 1 upon RB. So this is the value of the potential difference between two spheres. So we'll just put the value in this main formula of the capacitance. So it will become C is equal to Q, and now I will just put the value of the V here. It is KQ 1 upon RA minus 1 upon RB. From this Q to Q it get cancel out. I will just put the value of the K, which is 1 upon 4 pi epsilon naught, and denominator of the denominator will go on the upper side. So by putting this value I will get 4 pi epsilon naught, because 4 pi epsilon naught is the denominator of the denominator, so it will go on the upper side. So Q get cancelled out, so on the downside I will get 1 upon RA minus 1 upon RB, right. So now I will just take the LCM here, so it will become 4 pi epsilon naught, and the LCM is RA RB. So by solving this, here comes RB minus RA, right. So this denominator of the denominator will go on the upper side, so it will become 4 pi epsilon naught RA RB divided by RB minus RA. So what will be our final formula for the capacitance of a spherical capacitor? That is C is equal to 4 pi epsilon naught RA RB divided by RB minus RA. So this is my final expression, where C is the capacitance of the spherical capacitor, epsilon naught is the permittivity of the medium lying in between these two spheres, R is the radius of the inner sphere, RB is the radius of the outer sphere. So I hope the derivation and the basic concept of the spherical capacitor is clear to you. So for more videos, just share and like this video. Thank you.